Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is what is a physical quantity. We will study what is a physical quantity and what are the types of physical quantity. This is our today's topic. This is topic number one or chapter number one, physical quantities and units. Physical quantities and units. This is the chapter name. And our today's topic is physical quantities. What are physical quantities? We will study this. So two things we'll study here in this lecture. What are physical quantities and the types of physical quantities. These two things we will study in this chapter, in this lecture. So physical quantities, first of all, we will define what is a physical quantity. The quantities which can be measured are called physical quantities. The quantities which can be measured are called physical quantities. Or any quantity which can be measured is called as a physical quantity. Any quantity which can be measured is called as a physical quantity. For example, length can be measured. So length is a physical quantity. Also mass can be measured. So mass is a physical quantity. So length is a physical quantity and mass is a physical quantity. And there are different physical quantities. There are many physical quantities, and every physical quantity we can measure it. Now, the examples of physical quantities. There are different examples of physical quantities. For example, length, mass, time, temperature, electric current, area, volume, speed, velocity, acceleration, force, work, energy, weight, torque, density, momentum. All these are physical quantities. All these are physical quantities. And all these quantities can be measured. So they are all physical quantities. So these are a few examples of physical quantities. There are so many other physical quantities. There are so many other physical quantities. Now the types of physical quantities. There are two types of physical quantities, that is base physical quantities and derived physical quantities. These are two types of physical quantities. Number one, the base physical quantities. What are base physical quantities? The quantities which are not derived from other quantities are called base physical quantities. The quantities which are not derived from other quantities are called base physical quantities. Or we can also define the quantities in terms of whom other quantities are defined are called base physical quantities. The quantities in terms of whom other quantities are defined are called base physical quantities. For example, length, mass, time, temperature, electric current, intensity of light, and amount of substance. These are the base physical quantities. These are the base physical quantities. And these are the quantities which are not derived from other quantities. And these are the quantities in terms of whom other quantities are defined. So these are base physical quantities. So all are the base quantities of SI system. These are the base quantities of SI system.
Now, number two, the derived physical quantities. This is the second type of physical quantities. First was base physical quantities. Now, second is the derived physical quantities. Now, what are derived physical quantities? The quantities which are derived from other quantities are called derived quantities. The quantities which are derived from other quantities are called derived quantities. For example, area, volume, speed, velocity, acceleration, force, weight, energy, work, density, torque, power, pressure, heat energy, voltage, resistance, charge. All are the derived quantities. These are all derived quantities because we derive these quantities from the other quantities. So that's why they are called derived quantities. So these are a few examples of the derived quantities. There are so many other derived quantities. And these derived quantities belong to some system. So there are different system of units, and these derived quantities, these physical quantities belong to any system. Some belong to one system, some belong to other system. So I'm going to introduce you little bit the system of units, the systems, and in these systems the physical quantities are lying. So different system of units are here. First is the SI system, that is the System International. Second is the MCAS system, that is meter kilogram second system. Third is the CGS system, that is centimeter gram second system. Fourth is a FPS system, foot pound second system. So all the physical quantities belong to these systems. So these are the four major systems, and all the quantities belong to these four systems. Now the basic quantities of different systems. Basic quantities of different system of units. So quantities are of two types, that is basic quantities and derived quantities. Here we are going to discuss the basic quantities. Now these are the four systems, that is SI system, MCAS system, CGS system, FPS system. So we are going to discuss the basic quantities of these four systems. So every system has basic quantities and derived quantities. That, for example, SI system has its own basic quantities and derived quantities. MCAS system has its own basic quantities and derived quantities. And same is the case of CGS system and FPS system. So here we are going to discuss the basic quantities of these four systems. So these are the four systems, that is SI system, MCAS system, CGS system, FPS system. Now these are the basic quantities of SI system. These are the basic quantities of MCAS system. These are the basic quantities of CGS system, and these are the basic quantities of FPS system. Here these are the 7 basic quantities of SI system, that is length, mass, time, temperature, electric current, intensity of light, and amount of substance. These are 7 basic quantities of SI system. MCAS system has 3 basic quantities, that is length, mass, time. CGS system has 3 basic quantities, that is length, mass, time. FPS system has 3 basic quantities, that is length, weight, time. So here weight is the basic quantity in FPS system. Here mass is not basic quantity, but weight is the basic quantity. In other system, mass is the basic quantity here, here, and here. But here weight is the basic quantity. So this is the chart of basic quantities of these four systems. Now next, number 2, that is the derived quantities of different systems. So here we are going to study the derived quantities of the four systems. So these are the four systems: SI system, MCAS system, CGS system, FPS system. Now here these are the derived quantities
of SI system. That is, these are the dried quantities of SI system, and these are the dried quantities of MCAS system, you can see here, and these are the dried quantities of CGS system, and these are the dried quantities of FPS system. So here in these systems, here weight is the dried quantity, here weight is the dried quantity, here weight is the dried quantity. But here in FPS system, weight is not dried quantity, but here mass is the dried quantity in this system, you can see here. So this is the chart of dried quantities of the four systems. Now next we are going to study how we get dried quantities. How we get the dried quantities? We get the dried quantities by multiplying or dividing the other quantities. We multiply two quantities and we get a third quantity. This third quantity is a dried quantity. Or sometime we divide one quantity on the other quantity and we get a new quantity. This new quantity is the dried quantity. So by multiplying or dividing different quantities on one another, we get the dried quantities. So we can take different examples of the dried quantities, how they are derived, how we derive, how we get the dried quantities. This we are going to study here. How we get the dried quantities, this we are going to study here. Now case number 1, area is a dried quantity. Now we are studying how we get area, how we get the dried quantity area. Now consider this a triangle, and triangle, this is the length, this is the width. This is the one quantity, this is the second quantity. Now we have area of the rectangle is equal to length multiplied by width. Length multiplied by width is the area. Now here we multiply length and width and we get area. So area is derived from length and width. Area is derived from length and width. So we multiply the length and width and we get the area. So it means that area is derived from length and width. So that's why area is called as a derived quantity. Area is called derived quantity because we derive the area from length and width. By multiplying length and width, we derive the area. So area is a derived quantity. So by multiplying the quantities, we get the dried quantities. So area is a dried quantity because we derive it from length and width. Now the second example of the dried quantities is the volume. Volume is a dried quantity. How we get the volume? How we derive the volume? This is the example of cuboid. This is the length of the cuboid, this is the width, and this is the height. So we have volume. Volume of the cuboid is length multiplied by width multiplied by height. So by multiplying length, width, and height, we get the volume. So it means that we derive the volume from length, width, height. We derive the volume from length, width, height. So volume is a derived quantity. Because we derive the volume from length and width and height, so that's why volume is a derived quantity. It is derived from volume, length, width, height. So it is a derived quantity. So volume is a derived quantity.
Now take the third example of speed. Speed is a derived quantity. How we derive it? Consider the case of a car moving. This is the car, and this car is moving, and the car is covering some distance, and car takes some time from here to here. Now speed of the car is given as distance covered divided by time taken. Now in this case, we derive the speed from distance and time. We divide the distance and time and we get the speed. It means that speed is derived from distance and time. Speed is derived from distance and time. So speed is a derived quantity. Because we derive the speed from distance and time, so speed is a derived quantity. So here, by dividing one quantity on the other quantity, we get the third quantity. And this third quantity is the derived quantity. So speed is a derived quantity. Now take example number 4. Force is a derived quantity. How we derive the force? So consider a body of mass m moving with acceleration a, as in diagram. This is the body of mass m moving with acceleration a, and there is a force acting on this body. So force can be written as force is equal to mass into acceleration according to Newton's second law. So force F is equal to m multiplied by a. So in this case, we derive the force from mass and acceleration. We derive the force from mass and acceleration. So force is derived from mass and acceleration. So force is a derived quantity. Force is a derived quantity because we derive the force from mass and acceleration. So in this case again, by multiplying two quantities, we get the third quantity, and this third quantity is a derived quantity because we derive it from mass and acceleration. So force is a derived quantity. So same is the case of other quantities. For example, acceleration is derived from velocity and time. We divide the velocity, change of velocity over time, and we get the acceleration. So in this case, acceleration is derived from velocity and time. So acceleration is a derived quantity. Also, we derive work from force and distance. So work is a derived quantity because we derive it from force and distance. Also, power is a derived quantity because we derive it from work and time. We divide the work over time and we get the power. So power is a derived quantity because we derive it from work and time. Also, pressure is a derived quantity because we derive it from force and area. Force and area. So pressure is a derived quantity. Potential energy is a derived quantity because we derive it from mass, g, and height. Kinetic energy is a derived quantity because we derive it from mass and velocity. Torque, the moment of force, it is a derived quantity because we derive it from force and distance. So acceleration, work, power, pressure, potential energy, kinetic energy, and torque, all these are derived quantities. All these are derived quantities. So all these quantities are derived from other quantities, so they are derived quantities. So here we have studied the physical quantities and types of physical quantities, and how we get the derived quantities. This is our today's lecture.
तो हमारा आज का जो लेक्चर है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हम किस तरह हासिल करते हैं, ये हमारा आज का लेक्चर है। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है या टॉपिक नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट, ये हमारा चैप्टर का नाम है। और हमारा आज का लेक्चर है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारा आज का लेक्चर है। हम कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, ये हमारा आज का लेक्चर है। तो दो चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं और टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। ये हमारा आज का ये लेक्चर है, दो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ है फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, इसको डिफ़ाइन करते हैं कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, या जो भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटी की मुख्तलिफ मिसालें हैं। मसलन लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, सो लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इस तरह मास को हम मेजर कर सकते हैं, सो मास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो यहाँ मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो जितनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। तो हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। मसलन लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी, वेट, टॉर्क, डेंसिटी, मोमेंटम, ये सारी की सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। उसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। ये कुछ मिसालें हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मैंने दी हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, लिहाजा ये सारी की सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटी की दो किस्में हैं, एक है बेस फिज़िकल क्वांटिटी, दूसरी है ड्राइड फिज़िकल क्वांटिटी। ये दो किस्में, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और ड्राइड फिज़िकल क्वांटिटी, ये दो किस्में फ़िज़िकल क्वांटिटी की। सबसे पहले हम बेस फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। पहली किस्म ये है फिज़िकल क्वांटिटी की बेस फिज़िकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं करते उनको बेस फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं करते उनको बेस फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। या ये कि वो क्वांटिटीज़ जिनसे दूसरी क्वांटिटीज़ डिराइव की जाती हैं, डिफ़ाइन की जाती हैं, उनको बेस फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनसे दूसरी क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं उनको बेस फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। मसलन उसकी मिसाल है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी की सारी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इन क्वांटिटीज़ को हम दूसरी क्वांटिटी से इन क्वांटिटीज़ को हम दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं करते, लेकिन दूसरी क्वांटिटीज़ को इन क्वांटिटी से हम ड्राइव करते हैं, लिहाजा ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और ये एसआई सिस्टम की बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये पहली किस्म फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, इसको हमने डिस्कस किया है। दूसरी है ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी किस्म है ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज़। ये कौन सी क्वांटिटी होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनको हम दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं उनको ड्राइड क्वांटिटीज़ कहते हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं उनको ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, एनर्जी, वर्क, डेंसिटी, टॉर्क, पावर, प्रेशर, हीट एनर्जी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, चार्ज, ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इन सब क्वांटिटीज़ को हम दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं, लिहाजा एक सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। So all these are the derived quantities because we derive all these quantities from the other quantities, and there are so many other derived quantities. These are few examples of the derived quantities. ये तो कुछ मिसालें हैं derived quantities की। derived quantity और भी बहुत ज़्यादा हैं।
तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको दूसरी क्वांटिटी से हम ड्राइव करते हैं, इसलिए इनको ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। अभी जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं या बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, इन सब क्वांटिटीज़ का किसी न किसी सिस्टम से ताल्लुक़ है। ये क्वांटिटी किसी न किसी सिस्टम से ताल्लुक़ रखती हैं। लिहाजा पहले मैं आपको अभी थोड़ा सा सिस्टम्स के बारे में थोड़ा तारफ़ कराता हूँ कि कौन कौन से सिस्टम हैं। तो मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट है। पहला सिस्टम है SI सिस्टम, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। दूसरा MKS सिस्टम, जिसको मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम कहते हैं। तीसरा जो है CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। और चौथा जो है FPS सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो ये चार सिस्टम है, बड़े चार सिस्टम हैं। तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का इन चारों सिस्टम में से किसी न किसी से ताल्लुक़ है। तो ये चार सिस्टम है, इन सिस्टम से फिज़िकल क्वांटिटीज़ का ताल्लुक़ है। तो ये मुख्तलिफ सिस्टम्स की हम बेस क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चार सिस्टम, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, इन चारों सिस्टम की बेस क्वांटिटीज़ को पहले हम डिस्कस करते हैं। इनकी बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो हर सिस्टम की अपनी बेसिक क्वांटिटी, हर सिस्टम की अपनी बेसिक क्वांटिटीज़ भी हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ भी हैं। बस SI सिस्टम की अपनी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। MKS सिस्टम की अपनी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। इस तरह CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, इनकी भी अपनी अपनी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ हम इन चारों सिस्टम की बेसिक क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मसला आप देखें, ये चार सिस्टम है, SI सिस्टम है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। इन चारों की बेसिक क्वांटिटीज़ ये हैं। ये सारी की सारी SI सिस्टम की बेसिक क्वांटिटी है, ये MKS सिस्टम की, ये CGS सिस्टम, ये FPS सिस्टम। SI सिस्टम की 7 बेसिक क्वांटिटी है, मसलन लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसकी 7 बेसिक क्वांटिटी हैं। इस सिस्टम की 3 बेसिक क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास, टाइम। इसकी लेंथ, मास, टाइम, इसकी लेंथ, वेट, टाइम। यहाँ वेट बेसिक क्वांटिटी है। बाकी सिस्टम में मास बेसिक क्वांटिटी है, यहाँ वेट बेसिक क्वांटिटी है। तो ये बेसिक क्वांटिटीज़ का चार्ट है, चारों सिस्टम की बेसिक क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई हुई है। ये बेसिक क्वांटिटीज दिखाई हुई हैं चारों सिस्टम्स की। यहाँ ड्राइव्ड क्वांटिटीज दिखाई हुई हैं, मुख्तलिफ सिस्टम की ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। तो उसी तरह ये चार सिस्टम है, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। इन चारों की ड्राइव्ड क्वांटिटी यहाँ इस चार्ट में दिखाई हुई है। तो ये देखें, ये SI सिस्टम है, उसकी ड्राइव क्वांटिटी ये है। ये सारी की सारी SI सिस्टम की ड्राइव क्वांटिटी हैं। ये सारी की सारी SI सिस्टम की ड्राइव क्वांटिटी है। MKS सिस्टम की ड्राइव क्वांटिटी ये देखें। इस तरह CGS सिस्टम की ड्राइव क्वांटिटी है, और ये FPS सिस्टम की ड्राइव क्वांटिटीज हैं। इसमें एक चीज़ है कि इन तीनों सिस्टम के अंदर वेट, यहाँ देखें ड्राइव क्वांटिटी है, इधर भी वेट ड्राइव क्वांटिटी, इधर भी। लेकिन यहाँ FPS सिस्टम में वेट ड्राइव क्वांटिटी नहीं है। वेट चूँकि बेसिक क्वांटिटी है, यहाँ जो है ना FPS सिस्टम में मास जो है ये ड्राइव क्वांटिटी है। हालांकि बाकी सिस्टम में मास बेसिक क्वांटिटी है, यहाँ ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये चारों सिस्टम की ड्राइव क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई हुई है, देख लें। तो ये ड्राइव क्वांटिटी का चार्ट है ये। तो ये सब की सब ड्राइव क्वांटिटीज हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हम ड्राइव क्वांटिटीज हासिल किस तरह करते हैं, किस तरह हम ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं।
तो ड्राइव क्वांटिटी हम दूसरी क्वांटिटी से बनाते हैं, यानी दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें तीसरी क्वांटिटी मिल जाती है, वो तीसरी क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी है। या एक क्वांटिटी को दूसरी पे डिवाइड करते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी मिल जाती है, वो नई क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी है। तो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से जो क्वांटिटी हमें मिलती है उसको ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। तो मसलन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे एक तीसरी क्वांटिटी मिलती है, ये तीसरी क्वांटिटी क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। या एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं, इससे हमें एक नई क्वांटिटी मिल जाती है, ये नई क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये इसके लिए हम मुख्तलिफ मिसालों से हम आपको समझाएंगे कि किस तरह हम ड्राइव क्वांटिटी लेते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ मिसालें हमारे पास, वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह ड्राइव क्वांटिटी हम हासिल करते हैं। मसलन ड्राइव क्वांटिटी की पहली मिसाल एरिया है। एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो हम किस तरह इस एरिया को हासिल करते हैं? मसलन एक रेक्टेंगल की मिसाल है, ये लेंथ है, ये विड्थ है। तो ये रेक्टेंगल की मिसाल है, ये उसकी लेंथ है, ये विड्थ है। ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है। तो लेंथ है क्वांटिटी है, विड्थ है क्वांटिटी है। अब एरिया जो है हम किस तरह लेते हैं? एरिया लेते हैं हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया लेते हैं। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके जो एरिया लेते हैं, तो इसका मतलब एरिया को हमने ड्राइव किया किससे? लेंथ से और विड्थ से। तो एरिया को चूँकि हमने ड्राइव किया किससे? लेंथ और विड्थ से, लिहाजा एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो ड्राइव क्वांटिटी हमने किधर से लाई है? लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी हमने ली है इसको ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। तो एरिया इज ए ड्राइव क्वांटिटी। Area is a derived quantity because we derive it from length and width. इस तरह ये वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटी है, ये क्यूबाइड की मिसाल है, ये लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। तो वॉल्यूम किस तरह लेते हैं? लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम लेते हैं, लिहाजा वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों? कि इसको हम लेंथ, विड्थ, हाइट से हम ड्राइव करते हैं। सो वॉल्यूम इज ए ड्राइव क्वांटिटी बिकॉज वी ड्राइव इट फ्रॉम लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सो वॉल्यूम इज ए ड्राइव क्वांटिटी। इस तरह स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी किस तरह लेते हैं? ये कार मूव कर रही है, कार डिस्टेंस कवर कर रही है और टाइम ले रही है। तो डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हम स्पीड लेते हैं। तो स्पीड को हम ड्राइव करते हैं डिस्टेंस और टाइम से, डिस्टेंस और टाइम से ड्राइव करते हैं, लिहाजा स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है। सो स्पीड इज ड्राइव क्वांटिटी। क्यों? कि हम इसको ड्राइव करते हैं डिस्टेंस और टाइम से, लिहाजा स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है। तो इस केस में एक क्वांटिटी को दूसरे पे डिवाइड करने से तीसरी क्वांटिटी जो हमें मिलती है ड्राइव क्वांटिटी है। सो स्पीड जो है एक ड्राइव क्वांटिटी है। इस तरह फोर्स की मिसाल ले लें। एक बॉडी है जिसकी मास m है, उस पर फोर्स F एक्ट कर रही है और बॉडी मूव कर रही है एक्सेलरेशन a से। तो फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स हम लेते हैं। तो फोर्स को हम किससे ड्राइव करते हैं? मास और एक्सेलरेशन से। तो लिहाजा फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम ड्राइव करते हैं किससे? मास और एक्सेलरेशन से। तो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से हम ड्राइव क्वांटिटी हासिल करते हैं। फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मसलन एक्सेलरेशन ड्राइव क्वांटिटी हम किससे हासिल करते हैं? वेलोसिटी और टाइम से। वर्क ड्राइव क्वांटिटी किससे हासिल करते हैं? फोर्स और डिस्टेंस से। पावर एक ड्राइव क्वांटिटी किससे हासिल करते हैं? वर्क और टाइम से। प्रेशर ड्राइव क्वांटिटी किससे हासिल करते हैं? फोर्स और एरिया से। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव क्वांटिटी है, हम इन तीन क्वांटिटी से उसको ड्राइव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि मास और वेलोसिटी से उसको हम हासिल करते हैं। टार्क एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसको हम फोर्स और डिस्टेंस से हासिल करते हैं। तो सारी की सारी ये जो है ना, ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। सो
एक्सलेरेशन, वर्क, पावर, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टॉर्क, ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटी हैं, क्योंकि इनको हम दूसरी क्वांटिटी से हासिल करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर अंदर हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज को हम किस तरह हासिल करते हैं। ये हमारा लेक्चर है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। सो सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get every new video. Thank you.